started. Hello students, Namaskar and good morning to everyone. Who is here? Harsh, Nandan, Radhe, Ravi, you. Good morning everyone. Am I audible and visible to everyone? Hello? Good morning, Radhe. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, beta. How are you all? Fine, ma'am. Okay, so happy sunshine, yes, Shishwa. Same to you. Who is this, Ravi Patel? Okay, so are you excited to learn computer? Hello? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay, so before we start our class, it's time for the attendance. So everyone, please send your roll number quickly in chat box. Today's date is 24th of 7. Okay, wait 1 minute. Okay, 13 present. Okay, Ishva. Then 11, Radhik Rashandra, 11. Okay, beta. Next, all students, please send your roll numbers quickly in chat box. 15, okay. 19, okay. 7, okay. Ma'am, Dev present. Roll number 3. Okay, beta. Rest all students, please send your roll number quickly in chat box. 19 done. Okay, we will take attendance in last also because there are 2 less students. Might be other students will join late. Okay, now 13, yeah, done, beta. Okay, now we are going to start chapter number 3. We completed in your class chapter number 3. Chapter number 3. Have we completed in our class? No? Which portion is remaining? Ma'am, wait a minute. I'm opening. And acha, because of submission might be not done. Yes, ma'am. Ma'am, we had done till page number 31. Yes, ma'am. Okay, so today we are going to learn goal secret. And one more thing we are going to learn, which is given on page number 39, cryptocurrencies. Are you aware about this word, cryptocurrency? Cryptocurrency word से आप aware हो? No. Okay, cryptocurrency is one kind of digital money. What? Virtual money we can say. It is physically not available. जैसे rupees होता है, same like in cryptocurrency. One example I remember, Bitcoin. Yes, Bitcoin is the example of cryptocurrency. If you want to buy that cryptocurrency, then there are 3 ways to buy. You have to give real rupees for this. I mean, आपके पास जो rupees है वो उनसे भी आप buy कर सकते हो. Second thing, if you want to buy cryptocurrency, then yes, that product you have to sell. And third thing, some kind of codings are available. You have to take that coding. ठीक है, coding update कर सकते हो, then you can buy that currency. Elon Musk का नाम सुना है? He is investing money in this Bitcoin. Second thing, Jeff Bezos, he is
roaming in the space. Richest man in the world. Jeff Bezos. So before him, Elon Musk was the richest person in the world, but after this, उनमें थोड़ा सा update होता रहता है, right? So Jeff Bezos is roaming in the space. मैंने 3 or 4 days पहले Instagram में एक वीडियो देखा था. In that, one himself and three more people were there with him, and they are roaming in the jet. I mean, जो फ्लाई कर रहे हैं ना, वैसा वाला वीडियो था. जैसे आप जानते हो कि ग्रेविटी इज अवेलेबल ओनली ऑन द अर्थ, राइट? इट इज नॉट अवेलेबल ऑन मून एंड एक्सेट्रा. तो दे आर फ्लाइंग इन द जेट. इस टाइप का एक वीडियो आया था, अगर आपने देखा हो तो. Second thing, in Ahmedabad, one museum opened in the Ahmedabad. उनका opening I think 1 month या 15 days पहले ही हुआ है. In that 72 robots they display. An aquarium है, सब कुछ है, but that is related to robotics. That is why I am sharing this kind of things with you. Okay, so this is just for your information. Okay, let's start goal trick option. Okay, I am showing you my screen, computer screen. I hope you are able to see this. आपका क्लास ही पीछे है, हाँ? बाकी सारे क्लासेस में ये हो गया. इसके बाद वाला नेक्स्ट चैप्टर भी होगी. सेकेंड थिंग कि we have 6 chapters in syllabus. How many chapters in term 1 exam? How many? 6, because total 12 chapters are here. So anyhow we have to complete 6 chapters, right, before term 1. And let me give information about term 1 exam. It will start on 30th September. Okay? So as per the instruction on management, we have to give at least 15 days for the revision. 15 days, it means हमें 2 days मिलेंगे revision के लिए, right? And we have only August month, because in next week PA1 exam will start. At that time there will no activity classes, no computer classes, only subject related classes. Timetable you will get shown, right? So if we count, then we have 4 days only, and in 4 days we have to complete this all chapters. So it's my humble request to everyone. I am going to share PDF of chapter 1 to 6. Right? Textbook exercises. So that PDF you have to copy in your textbook. Exercises you have to complete it, because before term 1 exam, 1 week require for the checking, right? आप checking के लिए भी भेजते हो. So I don't want to do compromise with the explanation videos, right? So you have to little bit cooperate. At the time of revision, I will explain all the exercises. Okay? So let's start. What if analysis, page number 32. What if analysis? In that 2 options are there. First option is, let me open Excel. First is goal seek, and second option is, what is second? Scenario manager. Yes. So goal seek option we are going to learn today. It's a very simple. I am doing copy. Whatever instruction is given in your textbook, that can anyone explain what kind of instruction they have given? कोई देख के बता सकता है कि किस टाइप की इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे? Which is given on page number 32. पेज नंबर 32 पे है ये. किसके बारे में है ये? मैच लिखा है तो मैम गोल से कप्पे तो लगाओ. गोल सिक, दैट इज ऑप्शन विच वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. बट ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में है? दैट आई एम आस्किंग. हाँ जी जी, वेरी नाइस. सो मीनिंग ऑफ गोल सिक इज, सपोज आपकी एग्जाम है, ठीक है, एंड एक पेपर बाकी है, 5 पेपर्स कंप्लीट हो गए हैं, बट आपका टारगेट फिक्स है कि आपको कैसे भी करके
90% लाने हैं, राइट? सो आपको ये सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए 90% के लिए, राइट? दैट काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन डू. I'm zooming it so you are able to see it properly. 12. Okay, so total, see here properly. Again I'm zooming so you are able to see it properly. Okay, so for total I'm putting formula here is equal to sum and then break it, and you have to select this all options and then enter. For the average you have to select, you have to write is equal to and the sum of these all things, and that number is divided by the, how many numbers are here? 4. ठीक है, ये मैथ्स में आपने स्टडी किया होगा. नाउ इफ आई चेंज दिस नंबर, अगर मैं ये 21 की जगह 31 कर देती हूँ तो इट विल ऑटोमेटिकली चेंज, राइट? बट मुझे कुछ ऐसा करना है कि आई वॉन्ट टू फिक्स दिस एवरेज एंड टोटल, मुझे फिक्स करना है कि एनी हाउ इन दिस क्रिकेट match I want the average of this all matches will be 30. विराट, सपोज कर लो कि विराट कोहली है, विराट कोहली ने मीटिंग ली है, ये स्कोर के लिए माइंड में से निकाल दो, राइट? So he taken a meeting of all players and a match 1, 2 and 3. It's already done. Match 4 is remaining and Virat Kohli instructed to all players that anyhow ये क्रिकेट मैच की एवरेज 30 होनी चाहिए. तो आप उल्टा कर सकते हो, ये 30 हो तो फिर ये कितना होना चाहिए? ये 30 हो तो ये कितना होना चाहिए? मैथ्स में कौन इंटेलिजेंट है? 4, इट मीन्स 120 होना चाहिए. ये सारा फिक्स है, ठीक है? तो आप ये डिसाइड कर सकते हो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए. This kind of things we are going to learn by using goal-seek option. For this, steps are already given in your textbook. You can see the steps in your textbook, which is given bold, dark color. Ramya, good morning, beta. Something that you missed today? Is there any special day today? Yes or no? Anyone remember? Yes. What, Ramya? What? Iman. Which day? Guru Purnima. Guru Purnima. Okay. Guru Purnima. Thank you. Ma'am, I know the answer. How many runs they need in match? How many? Please tell me. 42. 42. Let's see 42 आता है या नहीं. For this, open page number 32. Steps are given there. Thank you so much, Kusi Kundaria. Okay, so first of all we have to go on data. Once I click on data, you can see that it is yes. What if analysis is available in data tool. You have to click on what if analysis. From this, second option is goal seek. You have to click on goal seek. Then they are asking set the cell. आपका गोल क्या है, आपको कौन सा सेट सिलेक्ट करना है. सो आई एम सिलेक्टिंग दिस वन एवरेज. ठीक है. सो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ देन द address of the cell it's automatically taken. Now the value, what value you want? I want the 30. And by changing cell, which cell you have to change? I want to change match 4 and then okay. आपका क्या था 40? आपने क्या बताया था 40? Again I am doing now. मैंने okay नहीं किया था. Okay, so it is right answer. Very nice. What's your good name? Actually, you are speaking, but I cannot recognize your voice. Ishwa is the writing. Okay, so value should be 30. Average की value. See, आपको steps remember नहीं करने हैं. Once you click on the goal seek, they are asking the set cell, which cell you want to set, to value, which value you want, and कौन सा cell change करना है. And then okay. Okay, understood? So this kind of things you can do by using goal seek option. ठीक है. You have to do practice at home. आप ऐसे करके भी practice कर सकते हो. ठीक है. Next is scenario manager. Please open page number 34. ठीक है.
यहाँ पे इसका ड्रॉबैक या नॉट कैन बी से ड्रॉबैक बट लिमिटेशन, यस, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस, कि वी कैन चेंज ओनली वन वैल्यू एंड वी कैन चेंज ओनली वन। अगर ऐसा हो कि थर्ड एंड फोर्थ दोनों मैचेस बाकी है, थर्ड एंड फोर्थ दोनों मैचेस बाकी है एंड एवरेज सेट करना है, so this is not possible by using goal tick option, so that scenario manager is a very useful option. This is not for that, but scenario manager option is useful for आप अनुपमा वाली सीरियल देखते होंगे, देखते हो? No, ma'am. एक दो एपिसोड अच्छा नहीं, it's okay, fine. अच्छा, okay, otherwise I will give one example. It's okay, fine. By using scenario manager, ये जो कॉमर्शियल फील्ड होती है, कॉमर्शियल कंपनीज होती है, उसमें ये सिनारियो मैनेजर ऑप्शन इट्स वेरी यूजफुल ऑप्शन, बिकॉज उसमें सपोज वन प्रोडक्ट इज लॉन्चिंग बाय वन कंपनी, नाउ दे आर डिसाइडेड कि दे आर distributing this in Morbi, in Rajkot, in Junagadh metro cities, right? So they decided कि approx 50-50 products हमें चाहिए होगी, 50-50 products, ठीक है? 50 या 500 ले लीजिए, 500 प्रोडक्ट्स यहाँ, 500 प्रोडक्ट्स यहाँ, 500 प्रोडक्ट्स यहाँ, तो उसके अकॉर्डिंग हाउ मच मैन्युफैक्चरिंग दे हैव टू डू इन दिस मंथ, और इफ इंस्टेड ऑफ 500 इफ दे डिस्ट्रीब्यूटेड 1000 प्रोडक्ट, तो फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग क्या होना चाहिए, इस टाइप की पॉसिबिलिटीज वो सोचते हैं, राइट? So that kind of, for that kind of possibilities उनके बहुत सारे तर्क होते हैं कि decide this or decide that one. For that scenario manager option is useful. Let's see this. I'm deleting this. Okay, and I'm clicking again on what if analysis. From this I'm choosing scenario manager. Then they are asking to add scenario. I'm just clicking on this. Once I click on this, they are asking the name of scenario. ठीक है? तो मुझे यहाँ पे रन्स की जगह पॉसिबिलिटी 1 लिखूं या फिर सिनारियो 1 लिखते हैं? चलो सिनारियो 1, आई एम राइटिंग चेंजिंग सेल। आपको कौन कौन से सेल्स को चेंज करने हैं? ओके, तो मैच 1 and 2 इट्स डन, मैच 3 and 4 आई वांट टू सेल चेंज, सो सॉरी, सो मैच 3, मैच 4, सॉरी कॉमा करना पड़ेगा मुझे, ओके, कॉमा 9-1 I selected. Now this one again comma and this one. जो जो cells को आपको changes करनी है, that cell you have to select. Changes के लिए select किए थे, उस cell की वो value पूछ रहे हैं, ठीक है? So C9 and then C8. अच्छा मैंने ऊपर नीचे कर दिया, it's okay. So Virat Kohli is taking a meeting of all players and he told कि third match is against Sri Lanka, so they can score, Sri Lanka team is very strong, so they can score only 50, ठीक है? C8 it means match 3 is against Pakistan, so they can score more, so they can score approx 80. And C6, what is C6? अच्छा C6 मैंने कब सिलेक्ट किया था, सॉरी, आई एम डूइंग इट अगेन, सिनारियो 1, ठीक है, एंड देन आई एम चूजिंग सेल्स, रन्स मुझे चेंज करना है, फिर आई वांट टू चेंज मैच 3 एंड आई वांट टू चेंज मैच 4 एंड देन ओके, वंस यू क्लिक हियर C4 इज हियर, इसकी जगह पे मैं यहाँ लिख देती हूँ सिनारियो 1, ठीक है? C8 and C9. C8 is in the now ठीक है, अगर इस Ma'am, your voice is cutting.
Ma'am, ma'am, your voice is cutting. Let me. Okay. Hello, is it coming properly now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so scenario 2, in this, suppose if I got 45 runs, then 75 and then okay. Okay, if you want to see scenario 2, then you can see it from here, 45 and 75. ठीक है, इस टाइप के डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आप यहाँ से ऐड कर सकते हो. एंड देन व्हेन यू टेक अ मीटिंग, जैसे आप मूवीज वगैरह में देखते हो, मीटिंग्स के लिए वो लोग प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं, चार्ट्स वगैरह बनाते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग्स you can do it from here. Okay, okay, once you click on OK, if you want to see this one, then you can see it here. If you want to see scenario 1, then click on this. 2, click on this. 3, click on this. Understood everyone this much? Yes. Hello. Yes, ma'am. It's very easy. Once you do practice at home, you will able to make a scenario related to this. Okay, now open page number 38. You have to do practice at home. If you have any query, then you can ask me in next period. Okay? Yes, hands-on is already given. If you want to do extra practice, then you can work with hands-on. Second is E. Think and answer is given there. Please open think and answer, and this will read by the Yug Detroja. Will you please read what is it? Think and answer. Hello, Detroja. Okay, read this things on which is given on page number 38. Are you available here? He left? He's not available. Fine. Yug? Hello, Yug. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Will you please read this? Your voice is cutting. Okay, will you please read this? You have to read this one. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Ma'am, D1 na. C. E, sorry. Okay, ma'am. A shop sells samosa and cutter which Cutlet. cutters Excel to can tell the number of samosas sell to earn a given profit. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, this is very nice. This is totally related to math subject. Let's check आपका maths कैसा है. They are telling that one shopkeeper is there. He is every day selling samosas and cutlets. Okay, samosas and cutlets. Now profit is fixed. It means I am writing profit here. Profit. ठीक है, प्रॉफिट अप्रोक्स चलो काउंट कर लीजिए 2000 रुपीज का. एंड ही इज आस्किंग दैट कैन टेल देम द नंबर ऑफ समोसा सेल टू अर्न गिवन प्रॉफिट. ये प्रॉफिट फिक्स है, समोसा कितने सेल करने हैं दैट दे आर आस्किंग. वेयर इज माय क्वेश्चन मार्क. यस, कटलेट्स इज फिक्स. चलो हम 500 कटलेट्स फिक्स कर लेते हैं. ठीक है, तो हमें कितने समोसा बेचने चाहिए या फिर कितना समोसा बेचने में कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए. तो मान लीजिए कि मुझे प्रॉफिट मिला है 500 रुपीज इन कटलेट्स. टोटल प्रॉफिट आई वांट 2000. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए समोसाज में 1500. Yes, that you can do by using whole stick option. ठीक है, understood?
अंडरस्टूड और नॉट? सपोज मान लीजिए 10 कटलेट्स, प्राइस पर सॉरी 50 cutlets and price per cutlet 10 rupees. Price per cutlet 10 rupees. Then how many samosas they have to sell to earn this profit? ठीक है, तो एनी हाउ यहाँ पे 1500 आएगा फॉर दिस 150 समोसास दे हैव टू सेल. अगर मैं यहाँ पे चलो ये आपको ये क्वेश्चन होगा कि इसका यूज क्या है भाई, ये तो हम ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इफ देयर इज बिग अमाउंट एंड मोर मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर एट दैट टाइम इट्स ऑटोमेटिकली गिव्स यू आंसर. अगर यहाँ पे आप प्रॉफिट चेंज कर देते हो तो वो ऑटोमेटिकली आंसर्स आपको करके देगा. हु इज गोइंग टू डू प्रैक्टिस एट होम? कौन इसकी प्रैक्टिस करेगा घर पे? विश्वा इज ऑलवेज रेडी फॉर ऑल वर्क. Rest all. See, I'm again telling you, Word and Excel, this is very important software. आप कोई भी फील्ड में कहीं पे भी वर्क करेंगे, ये दोनों चीजें हैं वो बहुत ही यूजफुल है. सेकेंड, अगर आपको if you are not interested to learn 7, 8, 9 chapter which is related to Q Basic 64, then it's okay. But Word and Excel is very important. Whether you become a teacher, doctor, engineer, कोई कुछ भी बनो, ठीक है? So please learn all options properly. Now, if you have any query, then you can ask in next period. So can we start new chapter? Because in other standard already this chapter is done. Ma'am, this chapter Exercise, I will share PDF. You have to do copy. Once we complete explanations, after this I will explain this exercises because it's a very simple है. If you learn properly this chapter, तो आप अपने आप भी solve कर सकते हो. ठीक है, चलेगा सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so next is working with charts. Wow, very nice chapter, and this we are going to learn with the Excel software only. Let me check. Yes, I have table also. Wow, very nice. So no need to type this all things. So today we are going to learn working with the charts. You can see on page number 40 they have given the steps. ठीक है, अगर आपको ये अपने आप घर पे लर्न करना है then you can do it because it is a very simple. Steps are given and ये टेक्स्ट बुक में ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने जो स्टेप्स, जो ऑप्शंस डार्क बोल्ड करके दिए हैं, दैट ऑप्शंस आर अवेलेबल इन एक्सेल, राइट? सो यू कैन डू वर्क एट होम ऑल्सो. आपको सभी पॉइंट्स रीड करने की जरूरत नहीं है. सो यू कैन सी स्टेप्स टू क्रिएट अ चार्ट. But before we start this chapter, let me test your math subject. Can anyone tell me which kind of charts are available? I mean, which kind of you work with which kind of charts? Graph book ऐसा कुछ बनाया होगा आपने. And in math subject you learn lots of charts from standard 4th. So please reply in chat box which kind of charts you learn. Because आज मैं जितने charts आपको लर्न करवाने जा रहे हो उतने वो इतने ज्यादा है कि उनके नेम्स भी आपने नहीं सुने होंगे. सो फर्स्ट लेट मी नो फ्रॉम योर साइड. हेलो, प्लीज रिप्लाई. कैसे कैसे चार्ट्स होते हैं? पाई चार्ट, बार ग्राफ. यस, वेरी नाइस इश्वा. रेस्ट ऑल स्टूडेंट्स, आपने मैथ्स में कोई चार्ट्स नहीं सीखे हैं? Rest all students from boys, Dev, Nandan, Ramya, Ravi, Rishika, you. Who is taking your math subject? I will complain to your teacher. अच्छा, तो आज मैं complain करूंगी. I asked one question in computer class about related to maths and no one replied. इसके दो रीजंस हो सकते हैं. एक तो
टीचर ने प्रॉपरली स्टडी नहीं करवाया, फिर मैं उसको ऐसा बोलूंगी कि ही नॉट टॉट प्रॉपरली टू मी, या फिर आपको याद नहीं है? व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन है? याद नहीं था या स्टडी नहीं किया है? राधे, व्हाट इज द रीजन बेटा? हेलो रवि, हेलो रवि, एटलीस्ट रिप्लाई हियर। आप यहाँ पे हो या नहीं हो? नंदन, ओके हर्ष, ठीक है। इसके अलावा आर यू अवेयर अबाउट एनी चार्ट? पाई चार्ट, बार ग्राफ? See, many kind of charts are given on page number 41 here. Line graph, yes, column graph, you can see it from here. We are going to learn today. And magic तो ये है कि whatever inputs you are giving, उनका automatically whatever chart you select, that chart automatically display in your Excel sheet. So are you ready to learn? Are you ready to learn? Sir, whenever your maths teacher will give you to make a chart, at that time you have to make that chart in Excel only. ठीक है? Okay, so are you ready? Okay, all students are not ready, I guess. Okay, जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेंगे, but जिसको पढ़ना है वो concentrate here. So steps are given here on page number 40. Downside you can see, first of all you have to make this table. After this, second one, insert. Third one, click on insert tab where it is. Yes, second one, I'm clicking on insert tab. Then you can see charts are available. From this I'm choosing this column chart. Once you click on column chart, you can see 2D columns. It means 2-dimension columns. I'm selecting on this, but you can see many options are there. 3D column, then cylinder, then cone, then pyramid, and all charts. If you want to see, then you have to click here. But I'm choosing first one, 2D column. Once I click on this, अरे बाप रे, ये क्या हो गया? Yes, I have to select this chart first. Insert and column and column. ठीक है? You can see. मेरे एक क्लिक करने से वो पूरा चार्ट यहाँ पे आ गया. Are you able to see it properly? Can anyone tell me what is this red color suggest you? First of all, can anyone explain this table? ये किसके बारे में टेबल है? That can anyone explain? Yes. No one? Table is laptop sold for month. Hanji, very nice, Hers. Thank you, beta. So that they are talking about PC, desktop, laptop, and tablet. And month wise, कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल हुई है उनके बारे में है. Then can anyone explain what is this red color is displaying? हमारा कलर है ना, आपके टेक्स्ट बुक का कलर थोड़ा सा डिफरेंस है. Desktop, absolutely right answer. Now tell me this parrot color. Yes, if you want to change this color, then you can change it from here. Huh? Once you click on this, you are able to change it from here. ठीक है, आप ऐसे करके change कर सकते हो. And the tablet is purple color. Okay. Now this is looking good, but see, if I want to see this table and this chart, I want to compare कि उन्होंने ये सही दिया है या नहीं. Then I can drag this, but it is not looking properly. I want to see this both together, not together but properly. So there is one option, that option we are going to learn today only. Second thing, turn page number 42. देखिए आपको यहाँ पे मैथ सब्जेक्ट में ये सीखा होगा कि यहाँ एक्सिस को भी हम कुछ लिखते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द टाइटल ऑफ द चार्ट. बट ये जो एक्सेल है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट इट इज नॉट एबल टू डिसाइड बाय
itself कि हमें क्या टाइटल देना चाहिए, एक्स एक्सिस पे क्या राइट करना चाहिए, वाई एक्सिस पे क्या राइट करना चाहिए. एनी गेसेस फ्रॉम योर साइड कि हम क्या हेडिंग दे सकते हैं? एनी गेसेस? यू चलिए सोचिए. मैथ्स में तो आप सोच के ही सब करते हो, ये तो रेडीमेड मिल गया आपको. सोचो सोचो, एक्स एक्स पे क्या है? 1 2 3 4 मीन्स व्हाट? 6 till 6. एंड यहाँ पे भी कुछ मंथ. वेरी नाइस, गुड. who give answer? who given Ishwa or time Ishwa? Okay, so months. And on y axis number of sold item. देखो उन्होंने अपनी तरीके से डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी है जो 48 भी है एंड कुछ चीजें ऐसी है कि 165 भी है. तो उन्होंने 1 सेल इज इक्वल टू 50 ऐसा आपने आप डिसाइड कर लिया, राइट? So let's give the title, but if I click here, I am not able to write. So one more option is available, which is given on page number 41, downside, chart tool, insert. Yes, one more thing I forgot to told you that once you click here, you can see there is. I hope you are able to see the menu bar also. Are you able to see my menu bar, which is this? Yes, yes. Hanji. So once I click on table, you can see till view menus are available. But once you click on this design, layout and format, these 3 options are available, which is in chart tool. अगर आप देख सकते हो तो ये ग्रीन कलर का हाईलाइट है, उसके नीचे ही इतने ऑप्शंस है. ठीक है? So once you click in this, you can do changes from here. For now, I'm going on design. Once I click on design, no, design layout. Yes, sorry. I'm clicking on layout. Once I click on layout, whatever options are available in layout that you can see here. Okay, from this I'm choosing this chart title. Once I click on this, you can see none option is available. अगर आपको chart को title नहीं देना है, then you have to choose none. Otherwise, above chart. ठीक है, I'm clicking on above chart. They are asking title. So month wise cell report ऐसा title हम मैं दे रही हूँ यहाँ पे, month wise cell report. ठीक है? Now if you want to add axis, then you can add title of axis from here. ठीक है? Primary horizontal axis, and from this none or title below axis. I'm writing title below axis. And क्या था ये? month. Yes, month. Month. Sorry. If you want to do formatting with this, then you can do it from here. ना? अगर आपको फोन स्टाइल कुछ भी चेंज करना है, then you can. ठीक है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, so you are able to see it properly. Again, I am going in layout. Once I click on layout, you can see many options are available there from this. Primary vertical axis title, and from this, yes, here many options are available. Rotate title, या फिर vertical title, या फिर horizontal title, this kind of options are available. आप एक एक practice करिएगा. उसका प्रीव्यू भी यहाँ पे छोटा छोटा दिखाया है ऑरेंज कलर का. ठीक है, वर्टिकल टाइटल अभी मैं चूज कर रही हूँ. एंड नेम आई एम गोइंग टू गिव आइटम सोल्ड. ठीक है, ऐसा मैंने टाइटल दे दिया. एंड देन इफ यू वांट टू डू हाईलाइट दिस, देन यू कैन हाईलाइट इट फ्रॉम हियर. ओके, ठीक है, ये हुई बात इसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड चार्ट की. ठीक है, नाउ रीसाइजिंग एंड मूविंग. यस, अगर आपको इसको रीसाइज करना है, देन व्हाट इज डन व्हेन वी डू रोटेट टाइटल? अच्छा, ओके, लेट्स सी. गुड आंसर, गुड क्वेश्चन. आई एम क्लिकिंग हियर, अगेन गोइंग इन लेआउट एंड देन एक्सिस टाइटल, रोटेट टाइटल. ठीक है, अगर मैंने रोटेट टाइटल लिखा तो यू कैन सी, आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे हम ग्राफ बुक को रोटेट करके फिर लिखते हैं ना, दैट काइंड ऑफ टाइटल विल अपीयर हियर. Okay. Okay. Okay, this kind of options you can do practice at home also. जो पर्पस यहाँ का है कि चार्ट, that I am going to explain you. So
once you do practice at home, you will learn lots of things जो मैंने नहीं teach करवाया है. ठीक है, अगर आपको resize करना है then you can do resize from here. But if I want this on new page, then one more option is available here, which is given on page number 43. Where it is move chart. Yes, once you click here, अगर आप यहाँ पे click करेंगे in the chart, then this option is not available here. But if you click on the axis side, then move chart option is available. New sheet. अगर आपको new sheet में चाहिए, then you have to click new sheet. Once you click on new sheet, you can see chart 2. It's automatically taken name of the sheet. But if you want to change the name of sheet, then you can change it from here. इसमें बैकग्राउंड में जो ये सेल्स होते हैं ना, रो कॉलम्स, दैट विल नॉट अपीयर. अगर आप ये चूज करते हो कि सीट 1, सीट 2 या सीट 3 में मूव करना है, तो दैट विल अपीयर. ठीक है, आई एम चूजिंग दिस वन. You can see chart 1 is already here because in a previous class I taught this thing to them. Now I'm clicking OK. Once I click on OK, you can see chart 2 is available here and one report is generated here. Easy? Any doubt? Now one more question is I am going to ask you कि अगर ये मेरा चार्ट का वर्क फिनिश हो गया, राइट, but suddenly I found that in January month, instead of 65, I sold 165 items. आप देख सकते हो 65 यहाँ पे है, यहाँ पे 50 है, then after 50, 65 यहाँ पे है. ठीक है, but suddenly I realized that 165 यहाँ पे था. So if I write 165 here, तो वो ऑटोमेटिकली चार्ट में चेंज होगा या नहीं होगा? व्हाट इज योर ओपिनियन? मैम होगा. श्योर? बट इतनी सारी फैसिलिटीज वो देगा कि एक बार चार्ट बना लिया फिर आप चेंजेस करते हो, देन इट इज डूइंग चेंजेस. होगा? लेट्स सी. 165, लेट्स सी इन चार्ट. यस, 150. ये बहुत लाइट हो गया है ना, लेट मी जूम इट. हाँ जी, 150 के ऊपर 155. ओके, वेरी नाइस. लेट्स डू सेम थिंग विद दिस वन. ठीक है, ये कंट्रोल Z कर देती हूँ मैं, ये 65 कर देते हैं. यहाँ पे जो 2 लिखा है, 2, लेट्स सी व्हाट दे आर शोइंग इन चार्ट. 2 लिखा है तो वो दिख ही नहीं रहा है. सी, आई एम डूइंग इंस्टेड ऑफ 200. ठीक है. Oh, very nice. It means once we need chart, if we want to do any kind of changes, then we can do it from here. So it's very useful, isn't it? Yes. Okay, now page 54, changing the chart type. Yes, if you don't like this style, if you want to change the style of the chart, then you can change it from here. कहाँ पे जाएंगे? डिजाइन में, चेंज चार्ट टाइप. ठीक है, आपको ये चार्ट पसंद नहीं है, इसकी जगह पे इन्होंने कौन सा चार्ट लिया है? क्लस्टर बार. लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्टॉक, सरफेस, ड्रॉनट. once you see डोनट्स जो हम खाते हैं, दैट काइंड ऑफ पिक्चर इज अवेलेबल देयर. बबल, रडार, काइंड ऑफ चार्ट यू कैन सेट. चलिए हम चले जाते हैं कॉलम चार्ट में. क्लस्टर बार, cluster column है ये. There is cluster bar. Yes, I'm choosing this and then giving OK. Then you can see my chart is changed. ठीक है, vertical and horizontal उन्होंने change किया है. वैसे आप कोई भी preview यहाँ से select कर सकते हो. They are giving inbuilt what can we say, formats here. If you want to choose this format, then you can change it from here. अगर आपको ये पसंद है, ये पसंद है, whatever you like, that you can choose it from here. If you want to change the color of any particular entry, then you can change it from here also. Okay. One more option is here. Text direction. Yes.
which is given on page number 45. Layout, once you click on layout, you can see what is this? Axis title. There it is, axis title. Once I click on this, they are asking for the vertical and then more primary vertical axis. ठीक है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो अलाइनमेंट. अगर आपको ऐसे रोटेट करना है, ऐसे रोटेट करना है, ऐसे रोटेट करना है, दैट यू कैन चूज इट फ्रॉम हियर. ठीक है, जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे वो रोटेट हो जाएगा. यहाँ से बात करेंगे. No. Okay. Any doubt? Let's print this chart. Once you click on this, what is the name of this button? Office button. Once you click on this, you can see print option is available. From this, if you want to directly do print, then you can click print option. But if you want to see print preview, then you have to click here for the print preview. I'm just clicking on this. Now you can see print preview is looking like this. प्रिंट प्रीव्यू से हम देख सकते हैं कि कुछ कट नहीं हो रहा या फिर हमारे प्रॉपर पेज में सब कुछ आ रहा है या नहीं. ठीक है, इफ वंस इट्स डन यू कैन गिव प्रिंट. वंस यू क्लिक ऑन प्रिंट, one dialog box will appear. In this you can choose the printer name and you can choose the pages from here. Okay, and then you can give OK. Okay, now any doubt in today's session? Yes, ma'am. Which topics we learn today? Please reply in chat box quickly, because might be in next period we are going to start Flash. Doubt? Yes, Ishwa, please ask. See, ये सारे options once you do practice in computer, तो ही आपको जो भी आपकी queries होगी वो आपको पता चलेगी. Otherwise, yes ma'am, ऐसा ही करते रहेंगे आप. Ma'am. जी Ishwa. Yes, ma'am. As you have said that if we need to Hello, do print. Yes, ma'am. Ma'am, if there is no printer, then those students who join late, please tell me your roll numbers quickly. Send your roll number quickly in chat box. जिन्होंने late join किया है 14. Okay बेटा. $19 you already sent. Nandan, everyone please do practice at home. अगर आपको कुछ भी doubt है, then you can ask me next period, because once you do practice, after this only आपको doubts जो होंगे वो पता चलेंगे. Then I will give you the project to do some work. ठीक है? If you want to do more practice, then you can see page number 48. Page number 48 पे यहाँ पे already कुछ दिया हुआ है. You can do practice this also. Ramya Chokshi present, ma'am, roll number 5. Okay, Ramya. ठीक है? See, how can you change the color of this? That is also available here. I'm not going to teach you this. You have to learn it by yourself. And yes, this is called artificial intelligence. हम बहुत बार ये वर्ड सुनते हैं कि AI is trending and इसका जमाना है वगैरह. So meaning of AI is only one, that it can decide by itself कि what they have to do. जैसे कि उन्होंने decide कर लिया यहाँ पे कि X axis पे 50-50 numbers ही लेने हैं. Ma'am, if there is no printer, then we will do print from start button. Then what happens? बेटा कुछ भी नहीं होता है. अगर आप प्रिंटर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रिंट एंड प्रिंटर, ठीक है, तो यहाँ पे वो प्रिंटर आएगा ही नहीं. नेम ऑफ प्रिंटर इट विल नॉट डिस्प्ले. ठीक है, अदरवाइज आता भी है तो फिर भी कोई उसकी प्रिंट नहीं आएगी. राइट? Once you connect with printer, you have to install the drives of printer. Then only it will come. Okay, so bye. Have a very nice day. Enjoy your day. bye, ma'am. Now you can leave meeting. Bye. Am I audible?
हेलो, am I audible? ऋषिका, आप तो कुछ बोल ही नहीं है इस क्लास में. बाय.